Assalamu alaikum students. Our today's video is on DHCP protocol. Previously आपने multiple protocol study किए, so today we will be covering DHCP protocol, and it is being discussed in two set of labs, lab number 9 and lab number 10. So we will be covering both labs, right? So what itself DHCP protocol is, it is basically dynamic host configuration protocol, right? And whenever we are dynamically assigning any IP address to a set of computers, then at that specific spot we basically use this DHCP protocol, right? So it's a network protocol, and it is applied or it is used at the application layer of internet protocols, right? So in a layout, whenever you are basically using a DHCP, you connect your systems or PCs with the help of a router to any specific server which is providing the DHCP services, right? आप किसी भी ऐसे सर्वर के साथ अपने सिस्टम को कनेक्ट करेंगे जो DHCP सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, right? So how does a DHCP works? इसमें basically procedure जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि let's understand it with the help of a figure because it's much easier than the written version. जब भी आप you being a client, या अगर आपका system है and you are the client and you want a dynamic IP address which basically changes after some time, right? ये वही fix नहीं रहती, कुछ time बाद change हो जाती है based upon the services जो आजकल हमारे routers provide कर रहे हैं. If you want to check it, you can easily check कि आपका अपना जो system है उसमें कौन सी सर्विस एक्टिवेट हुई हुई है. यू कैन चेक इट, राइट? सो जब आप कोई भी क्लाइंट या कोई भी पीसी व्हेन इट वांट्स टू कॉन्फ़िगर DHCP बेस्ड आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल बेस्ड, राइट? सो ये ब्रॉडकास्ट करता है request, right? And it wants to basically discover the specific server which is providing the DHCP service, right? So when it broadcast discover request, इसको reply में DHCP offer आती है from a specific system DHCP जिसके ऊपर DHCP has been enabled, right? System or server, right? So when it receives an offer, it again broadcast the request okay, now I actually want it because initially it discovered the system, then the request was offered by the server, and finally ये आप request करता है to again broadcast करता है to that specific server कि it want to enable DHCP service on its this system, right? So finally जो आपका server है, either it replies with an acknowledgement कि yes it can provide DHCP service to this specific client, या फिर वो reply करता है with a nag या not acknowledgement, right? कि वो this specific service को provide नहीं कर सकता due to any specific reason, right? For example उसके पास IP addresses जो थे सारे use हो गए हैं, more options नहीं है, etc, right? So replies are in two versions, right? So अगर nag आएगा in that case, इस स्पेसिफिक सर्वर से आपकी DHCP सर्विस जो है वो एक्टिवेट नहीं हो सक रही. सो यस यू कैन और द सिस्टम कैन डिस्कवर अनदर क्लाइंट जो अनदर सर्वर विच इज़ प्रोवाइडिंग अ DHCP service, right? So the same procedure has been mentioned here in the theoretical version. If you want to go through it, everything which is being shown in the figure, it's also shown in this slide, right? So next move करते हैं toward benefits of using DHCP. Now if you remember, almost 5 to 6 years later, right, आप static IP addresses use करते थे जिसमें network administrator को manually enter करना होता था IP address, right, उसका mask, उसका gateway, right? That procedure was kind of hectic. ठीक है, आपको थोड़ा सा डाटा रखना होता था कि किसी और सिस्टम के साथ आपका आईपी कॉन्फ्लिक्ट ना आए, जो आईपी एड्रेस ऑलरेडी यूज़ हुआ है दोबारा नहीं यूज़ हो. प्लस यू शुड बी द एडमिनिस्ट्रेटर और आपको थोड़ा बहुत नो हाउ होनी चाहिए of how to assign an IP address and how to change it, right?
इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो आप स्टैटिक आईपी एड्रेसेस यूज़ करते होते थे ना। प्रीवियसली यही मोस्टली इम्प्लीमेंट होता था इन आईपी वर्जन 4, राइट। आईपी वर्जन 4 जो था, और प्रेजेंटली जो है आपके सिस्टम्स आईपी वर्जन 4 भी यूज़ करते हैं एंड आईपी वर्जन 6 एड्रेसेस भी यूज़ करते हैं, राइट। एंड प्रेजेंट सिस्टम्स में जो आपकी आईपी एड्रेसिंग है, इट इज़ मोस्टली शिफ्टेड टूवर्ड दी मैनुअल, फ्रॉम द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन टू DHCP प्रोटोकॉल वर्जन आईपी एड्रेसिंग, राइट। सो इट मीन्स कि आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है बाय इटसेल्फ, राइट, बाय this specific protocol DHCP, right। आपको manually नहीं enter करना पड़ता। network administrator, whoever is providing the service, he do not have to centrally manage it somehow, he would just be enabling this specific protocol। जब वो protocol enable हो जाएगा, all he have to do is initially running those few configurations जो इस protocol को enable करते हैं, and after that it's easy, ठीक है। if a system can, let's say, based upon its IP address, it can take up to 255 PCs or clients, then DHCP, with help of using DHCP up, or being a system administrator, right, network administrator, you are free of tension, yeah, you are free of that specific management जब तक कि आपके वो सारे के सारे 255 IP addresses यूज़ नहीं हो जाते, right। and you do not have to re-enter the network gateway as well, right। ये सारा procedure by itself enable होता है। you will be getting through it in uh, the software version, right, Cisco packet tracer version। अच्छा, if you want to check on your own system that whether जो है आपका enabling हुई भी है of this specific DHCP protocol, all you have to do is that you would be opening your command prompt, and right, this is somehow the version of your command prompt here, right। up because twice click हो गया, 2 times it has been opened, you will be using this specific command of ipconfig, right, which will give you details of your specific protocol use, right। so let's try it now। other than कि आपका एड्रेस क्या है, right, आपका सबनेट मास्क क्या है, आपका गेटवे क्या है, right, there is also some details about your, okay, that was ip config / all, right। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। IP config आपका IP एड्रेस, योर गेटवे एंड 234 जो आपकी डिटेल्स थी वो एज एन आउटपुट देता है। बट व्हेन यू टाइप IP config / all, तो आपको खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द करंट सिस्टम जो आप अपना PC यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या क्या इनेबल हुआ है, उसमें क्या क्या सर्विसेज हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल इनेबल हैं। सो प्रेजेंटली बिकॉज वी आर स्टडिंग DHCP, so it is enabled physical address, this is basically your एड्रेस IP वर्जन 6 का, ठीक है। सिमिलरली आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी प्रेजेंट है, DHCP सर्वर आपका कौन सा है, सिमिलरली मल्टीपल अदर जो आपकी डिटेल्स हैं वो भी इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। सो फॉर बिकॉज वी आर डिस्कसिंग DHCP प्रोटोकॉल, सो वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर details to that specific service, right। so what else, you actually, when you are going into your system, you actually type your specific range, आप range भी provide कर सकते हैं, ठीक है। for example maximum जो आपका final है this 8 bits आप यही रखना चाहते हैं for your systems और for your clients, ठीक है। but you do not want your DHCP to go from 0 to 255, ठीक है। in that case you can provide a starting IP address and you can provide an ending IP address and you can restrict this limit, right। in this specific case 80 to 90, it means आपका DHCP service, if you are enabling it on a server, वो just 10 IP addresses
प्रोवाइड करेगा रैंडमली टू द 10 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड सिस्टम। जो इनिशियली आपके 10 आएंगे उनको सर्विस प्रोवाइड होगी, राइट। ओके, नाउ DHCP सर्वर, एज आई सेड टू यू, ये एक स्पेसिफिक सर्वर अनेबल किया जाता है जिस पे ये प्रोटोकॉल इनेबल होता है, एंड व्हेन एवर एनी वर्क स्टेशन आस्क फॉर एन IP एड्रेस इट रिप्लाइज विद एन IP एड्रेस। इसी तरह DNS इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमनली यूज टर्म, जो कि डोमेन नेम सर्वर की टर्म है, एंड अगेन व्हेन यू आस्क फॉर अ स्पेसिफिक यू नो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल वेबसाइट, राइट, आप इसको इस तरह टाइप करते हैं, बट दे हैव अ सेट ऑफ यू टेबल जिसमें with this address उनकी IP addresses होते हैं, and ये आपको reply कर देता है with that specific IP address, right? Similarly, because these are the two currently recently जो आपके mainly used होंगे, these two would be this is for your present lab and this will be in the forthcoming labs. So this is somehow the know-how of DHCP and DNS, right? Plus एक RIP protocol की एक छोटी सी command use होगी। Currently I'm not going into the details क्योंकि ये lab number initial last जो आपकी labs हैं उनमें discuss होगा lab number 15 में। ये आपका dynamic routing protocol है जो constantly कुछ duration के बाद आपका first of all best path choose करता है between source and destination, and it kind of आपका जो उसको क्या कहते हैं, व्हाट्स द टर्म यूज फॉर इट, कंटिन्यूसली आपका पीरियोडिक जो उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, राइट। जो आपके राउटर पे अपडेट्स हैं दैट आर बीइंग पीरियोडिकली ब्रॉडकास्टेड, राइट, विद हेल्प ऑफ दिस रिप प्रोटोकॉल। प्रेजेंटली आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, बट नॉट एक इंस्ट्रक्शन इसकी यूज़ होगी, सो दैट्स व्हाई देयर हैज़ बीन वन स्लाइड। अच्छा, जब आप यही DHCP सर्विस इनेबल कर रहे होंगे इन योर लैब नंबर 10, लैब नंबर 9 में सिंपली आपने ये सर्विस एक सर्वर पे इनेबल करनी है एंड PCs को उसके साथ अटैच करना है। लैब नंबर 10 में आपने ये सर्विस एक राउटर पे इनेबल करनी है एंड देन PCs ने उससे IP एड्रेस फैच करना है, राइट। सो the first instruction that is very common in routers is IP DHCP, and then you can, if you want to restrict your IP address range, then you will write your first and your last excluded IP addresses, right, जो आप अपनी specified range जिसको आप exclude करना चाहते हैं यहाँ पे आप mention कर सकते हैं। For example, आप 0 से लेकर let's say 5 तक addresses नहीं mention करना चाहते हैं, so your first IP address will be 0 and for example 192.168.1. 0 up to 192.168.1. let's say 5, right? So यहाँ पे आप mention कर देंगे कि exclude the specific IP addresses. Then you define a specific IP DHCP pool with a name, let's say any name, right? जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पे आप define करेंगे for your router. Then you will define your mask of your router, right, your network address, your mask, which is the what is the default gateway IP, right? So default router and its IP, which is basically your gateway. And finally, if you want to go for DNS server and its IP address, you can state it. It's not very must, it's an optional option, ठीक है। आप करना चाहते हैं you can implement it, if you don't want to it's fine, right? So आपकी instructions कुछ इस तरह से run होंगी कि let's say you are excluding this set of IP addresses, right, 1 से लेकर 50 तक. So you are writing IP DHCP excluded addresses from 1 to 50. Then you are defining your DHCP pool of addresses, right, with a specific name. This is the name of your, let's say, network 10, right, for your router number 1, right, and then you are defining your network जो आपका नेटवर्क है उसका IP एड्रेस एंड इट्स मास्क, राइट। देन यू आर डिफाइनिंग कि आपका गेट जो डिफ़ॉल्ट राउटर का गेटवे एड्रेस होगा व्हाट वुड बी दैट फॉर दिस स्पेसिफिक नेटवर्क, राइट। दिस इज़ योर डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर एड्रेस एंड इफ़ यू वांट टू इनेबल द DNS सर्विस एज वेल, तो यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं कि फॉर दिस स्पेसिफिक address you want to enable your DNS service, but presently it's not required here, right? ये भी हम final forthcoming labs में we will cover it, right? So what you are actually doing again, you are specifying your range, then you are giving name to your network,
then you are finally as telling the IP address assigned to the host वो कितने होंगे उनकी रेंज क्या है राइट क्या उनका एड्रेस होगा you are actually specifying it in this term right finally you are stating your gateway address and in the last DNS service IP address was defined right which is so this is all for your theory part let's go toward your lab section